Woman, you are beautiful. Woman, you are smart. You are kind, you are unique, you're worthy of all the love and affection. You're never too much, but you're always enough. You're precious, the pearls, the gems are lesser in your presence. You're the most stunning of the precious of God's creation. You're worth much more than you can imagine. You're no separate species, but you're above all. You're worth lots. Lots more than even you are aware about yourself. Your worth surpasses all earthly things because, in the eyes of God, you are loved. Regardless of what they think of you, regardless of what they want you to think of you, your worth is yours. Where you stand, what you do, whether you're on the hot list or the not list, you're a topper or you're a dropout, whether you're a professional or a homemaker, whether you're Miss Popular or you don't even have a single friend, whether you're fit, whether you're fat, you are you. Each and every one of the women has a special power, the same strength to change the world, the same capabilities to bring alive. This is who you are. The moment you figure out what you're supposed to be doing, the sooner you get around doing it. Every time somebody pulls you down, you stand up even more strongly and say, not me, not possible. You are the daughter of the God, the chosen one by the Creator to create. You are the largest untapped reservoir of talent in the world. You are the one who changed the world. And it's not because you've gone liberal in your attitude, but because you have celebrated womanhood. You have succeeded as a woman. To celebrate this femininity, I would say, kya baat hai? Kuch Khaas hai with Dr. Sujata Kapoor. I welcome Dr. Sujata Kapoor on my show, Kya Baat Hai, Kuch Khaas Hai. Namaskar, Dr. Sujata Kapoor. My pleasure. Dr. Sujata Kapoor, with more than a decade of teaching and research experience, holding many degrees from the prestigious universities. She today works at JP Business. She's the first woman to write a comprehensive book in the area of behavioral finance. A passionate dancer and singer who loves to dress up. She loves to do makeup. Dr. Sujata runs her own YouTube channel. She has won the title of Top Runners Up at Supermom 19 and crowned as Miss India Renaissance at Mrs. India International Queen 2020. An autism activist, she works tirelessly towards the needs of special children. Her aim is to give them dignity and acceptance, a life full of dignity. She comes up with a unique concept and has named it Samvednayein. I could go on and on about her, but I would rather let it be Dr. Sujata ki kahani unki apni zubani. So welcome Dr. Sujata Kapoor. Before I start my show, let me also thank my channel partners. I welcome you all. I'm on this Kya Baat Hai season 2 Kuch Khaas Hai. My name is Ramita Taneja. I'm a life coach and a counselor by profession. I'm also the vice president of an NGO, Sunshine Society, an NGO which is instrumental in education of more than 500 lesser privileged children. I and my co-team members work very enthusiastically towards the single goal, basic education for all. I take pride in being associated with Sunshine Society. I'm also the secretary with a social body called NOFA. NOFA works for the welfare of society at large. All member societies work towards making Noida a cleaner, and safer place. Be it security, pollution, or any other concerns of the citizens. NOFA members are always on the go. I'm also the presiding officer of POSH, that is Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace. I write articles. I love to hold talk shows. I'm also a soft skill trainer and a motivational speaker. And before I start, I would like to thank 10 News for giving me this opportunity, an opportunity to all my guests to reach out to such a large number of people. Thank you, 10 News. Let's begin the show today. Dr. Sujata Kapoor. Who is Dr. Sujata?
Hello, everyone. I am Dr. Sujata Kapoor, and it's indeed a pleasure to be on this show. I'm an academician and I'm an avid researcher. My research interests are behavioral finance and corporate finance, and I am working as program director. Of BBA program at JP Business School, Noida, and I'm teaching core and advanced papers to the MBA students in the finance area. Personally, I am a handpicked and chosen mother to a child called Visharda, who's on autism spectrum disorder. And I love dancing, and I run my own YouTube channel for personal styling, eye makeup, cooking. And recently, I have launched an initiative by the name of Samvednayein, which is basically a platform for the special children to showcase their talent. And above all, I'm a lady with a beautiful heart because somebody said that the most beautiful things in life cannot be seen with eyes. You need to have a pure heart to feel the things. So I'm a person with a pure and a loving heart. So beautiful. I think you summed it up so beautifully. But there is so much to read about you. You're a professional, you were a professional, a professor, an autism activist, Mrs. India Renaissance, an author, a homemaker, too many aspects to cover. So we'll go one by one with all of them. How did you get the inspiration to do so much, and where did you get the inspiration to write the book from? Uh, since childhood I had this feeling कि यार मरने के बाद ना इंसान को याद रखना चाहिए. मतलब मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि आई एम एवरग्रीन इन एवरीबडीज मेमोरी, even I not there. And for book, there were three turning points in my life which really inspired me to write the book. I Uh-huh. remember way back when I was doing my PhD, my PhD supervisor, she's my best critique. You know, she once told me, Sujata, you are amazing. You are so deep. You delve into the topic so deep inside, and you are so hardworking. But sometimes your writing is so monotonous, and while speaking also, you become monotonous. That hit me. मुझे लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा. How can I be monotonous in speaking and writing? The second turning point of my life was when I got in touch with Professor Baker Kent of American University. He's a kind of celebrity in our area, behavioral finance, corporate finance. He's written more than 200 books. And I started writing research papers with him. I told him that I don't have a very a fancy and a very uh, this kind of background, alluring background. But the only thing which I have is that I'm very hardworking. So he decided to write papers in collaboration with me. So then he taught me to write in a very lucid and very interesting manner. तो एक वो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था. और तीसरा, व्हेन माय डॉटर वाज डायग्नोस्ड ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, माय हस्बैंड यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट. और क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग होती है स्पेशल चिल्ड्रन की, तो स्लाइटली आई गॉट कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी. मतलब थोड़ा सोशलाइजेशन कम हो गया. तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ में शी इंड्यूस लॉट ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन. तो जो टाइम मुझे मिलता था ना, वो सारी चीजें मैं वो आई यूज टू फोकस ऑन राइटिंग बुक. तो ये तीन चीजें मेरी लाइफ की थी. मुझे एक्चुअली मैं बिल्कुल बैंग ऑन टाइम जो मुझे पब्लिशर्स ने दिया था उसके हिसाब से मैंने सारी डेडलाइंस मीट करी और आई केम आउट विद द बुक. Lovely. That sometimes in life कुछ कुछ गलत होता है, लेकिन वो आपको अगर अच्छी चीज के लिए इंस्पायर Yes, करता है, तो there is nothing like yes. I believe that I would not something say is गलत, difficult. but I would say that yes, God tests you at all times, and in those testing times, if things go right, then there is nothing like it. So, Yes, is the book true, true. available for purchase? Yes, the book is available on Amazon. You can easily buy it from Amazon, and it is also available on Sage Publications website. And I've been lucky enough that it has been adopted as a textbook by some of the prestigious business schools. So I'm very happy about it.
Very nice, very nice. So, doctor, why did you choose the field of autism on as a social work? I mean, I understand now that because you were born with a daughter who had this special disorder, but did that make you really go into this field, or were you always keen on taking up something like that? So actually, it was like my daughter was diagnosed on autism spectrum disorder. That is was one of the joel definitely. और दूसरा Hmm. जो चीज मुझे लगती है कि it is the most misunderstood neurodevelopmental disorder. Everyone thinks that it is synonymous to intellectual disability. तो मुझे यही बताना है सोसाइटी को कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है. These children are specially able, they are uniquely able. तो आई जस्ट वांटेड कि ये जो मिसकंसेप्शन है ना दुनिया का अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसी ने मुझे इंस्पायर किया है. एंड ऑफ कोर्स जब घर में प्रॉब्लम आती है तभी आपको पता चलता है कि एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम क्या है. तो वो तो डेफिनेटली एक रीजन है ही है. राइट. सो आपका रिएक्शन क्या था जब आपकी बेटी को आपको पता चला कि वो ऑटिज्म से इन्फेक्टेड है? व्हाट वाज योर इमीडिएट रिएक्शन टू दिस डिसऑर्डर? ऑफ कोर्स लाइक जैसे कहते हैं ना एक ईडियम होता है, एक ईडियम हमने हमेशा सुना था मुहावरा एक बचपन में, एक पैरों तले जमीन खसक जाना. मैंने जिंदगी में पहली बार मतलब वो एक्चुअली मुझ पर हुआ, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई. और मुझे एक्चुअली आई फीलिंग ऑफ डिसडेन, आई फेल्ट लॉट ऑफ पेन. मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती. और मैं सोच मेरा ना लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत एक्सटर्नल बन गया. मुझे ऐसे लगने लगा उसकी वजह से ऐसा हुआ ये हुआ कुछ टाइम तक. और देन आई थॉट कि अब मैं उसको ये डॉक्टर के ले जाऊंगी, आई गिव हर द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, आई डू दिस आई डू दैट. और मैं उसको ठीक कर दूंगी, कैसे भी ठीक कर दूंगी, अच्छी से अच्छी चीज लूंगी, सब कुछ बेस्ट ट्रीटमेंट दूंगी. तो ऑफ कोर्स लॉट ऑफ डिसडेन, आई वाज परप्लेक्स्ड, इतनी एंजाइटी. मतलब लाइफ में कभी सोचा नहीं था, मैं कभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी. स्पेशल चिल्ड्रन से तो मैं हमेशा मिली थी, बट वाकई पैरों तले जमीन खसक गई थी. ओके. सो आपको पता कैसे चला कि ये एक डिसऑर्डर है? आई मीन, हाउ डिड यू एग्जैक्टली कम टू नो दैट व्हाट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? Did the doctors tell you in the very first checkup that they did, or was it over a series of time and the checkups that you came to know? Yes. Actually, autism spectrum disorder, some of the children they have it since birth, but for my daughter it was more of neuroregression. So initially when she was born, she was a very very active child. आपको पता है लिफ्ट में लोग मुझसे रोक कर मुझसे पूछते थे कि आप अपने डॉटर को कैसे सिखाते हो, शी इज सो एक्टिव. और उसका स्पीच भी पूरा प्रॉपर एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी था, सब कुछ भी था. But it was like when she became 1.5 years old, she started withdrawing herself from everything. She used to get Okay. scared of strangers, crowd. उसका age appropriate behavior नहीं था. फिर उसके बाद उसका speech delays थे. और अभी तो वो because she had underwent some treatment which we were promised कि वो बहुत अच्छा result देगा, but unfortunately it did not. So she has lost her speech. तो वो उसकी age appropriate communication नहीं थी, behavior नहीं था, बहुत behavioral deficits थे. तो then we went to developmental pediatrician, but मैंने already इतना पढ़ लिया था. Before the developmental pediatrician could tell me, I knew it that she is on autism spectrum disorder. Okay. So is this a normal kind of a symptom with every child that they kind of withdraw themselves? Can you come again? Your voice Is this is a normal, is this a normal thing that you see with all these children who have this autism spectrum? I mean, since you've seen and okay. you've seen it so closely, तो आपको पता होगा कि क्या ये normal symptoms होते हैं इन बच्चों को? Actually, this is known as autism spectrum disorder because ये spectrum है. यहाँ पर बच्चे mild से लेके severe तक range कर सकते हैं. But there are 3 areas जिसमें वो lacking है. और जितना उनका कमी होती है इन 3 areas में, उसके हिसाब से you categorize them as that they are mild or they are moderate or severe. Mild children can really
manage the things with a little bit of training, but the life is difficult for the children who are on moderate or severe spectrum. So there are three areas. First, they don't have an age appropriate behavior. उनके behavioral deficits होते हैं, ranging from being very hyperactive, rigidities हैं, एक fixed pattern follow करते हैं, sensory overloads हो जाते हैं उनको, वो ज़्यादा lighting नहीं ले सकते, heavy noise नहीं ले सकते हैं, और crowd से they feel very insecure, they get disturbed, उनके meltdowns हो जाते हैं crowd में. Second, उनका जो deficit जहाँ में बच्चों में देखा गया है कि speech delays होते हैं, speech age appropriate speech नहीं होती है, communication में problem होती है और socialization में problem होती है. They find difficulty in expressing themselves. So ये neural developmental disorder 3 areas में है, but वो range करता है, it's a spectrum. So your child can be mild, moderate or severe depending upon कितना deficit है. So this is like it sometimes very difficult to tell people कि जो autism spectrum disorder है, it's not it's not intellectual disability, it's not mental retardation. These children are specially able. ये बहुत अच्छे होते हैं एक फील्ड में. आप देखिए ऑटिस्टिक, कुछ ऑटिस्टिक बच्चे, they are very good dancers, some of them are amazing singers, they are reading, writing, एक particular field में बहुत अच्छे होते हैं, but उनके वो specialized training देनी पड़ती है आपको, and you have to take special care, and they are not intellectually disabled. Correct. Please, so यही मेरा message है. Sujata, we would like to ask, what are the various challenges of these special parents? How do you deal with such challenges? Challenges तो बहुत ज्यादा है, because बच्चों में rigidity है, बच्चे एक fixed pattern follow करते हैं, sensory overloads हो जाते हैं उनको, hyper activity है, behavioral deficit है, तो आप उसको handle करना, जैसे अभी ये seasonal changes हो रहे हैं, seasonal changes में these children find very difficult to sleep at night, उनका बहुत अजीब सा behavior हो जाता है कि sometimes they are very hyperactive, mood swings बहुत ज्यादा हो जाते हैं बच्चों के. और टॉकिंग अबाउट माय डॉटर, जैसे उसके तो मतलब और भी बच्चे ऐसे होंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जिनके फूड रिलेटेड बहुत एवर्जन्स होते हैं, टेक्सचर से रिलेटेड एवर्जन्स होते हैं. तो जैसे माय डॉटर वाज बॉटल फेड, शी यूज्ड टू सर्वाइव ओनली ऑन मिल्क फॉर 4 years. इट वाज ओनली टुडे आल्सो शी इज 7 years old, तो हम इसे सिर्फ मैश्ड खाना देते हैं. सो शी इज वेरी एवर्स टू फूड. तो ये जो पेरेंट्स हैं उनके चैलेंजेस इतने वेरिड है, बिकॉज ये स्पेक्ट्रम है का एक, और आपका एक कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको केटर करोगे, फिर दूसरी वो प्रॉब्लम वापस आ जाएगी. तो स्पेशल पेरेंट्स के चैलेंजेस तो ये है कि आप हमें पहले तो समझना पड़ेगा कि हमें स्पेशल पेरेंट्स के साथ हमें सिंपथाइज नहीं करना है, हमें उनकी वी हैव टू स्टेप इनटू देयर शूज और हमें उनके साथ एम्पथाइज करना है. Correct. Dr. Sujata, what kind of treatment is available to these children? What is the treatment? Is India quite equipped with giving treatment to these children? मैम, देयर इज नो रेडीमेड क्योर कि हम मेडिसिन दे देंगे और बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है अनफॉर्चुनेटली फॉर चिल्ड्रन हु आर ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. द ओनली वी हैव behavioral therapies, we have applied behavioral therapies which we can give to the children. We can give music therapy, range of therapies है, ये डिपेंड करता है कि आपके चाइल्ड को सूट क्या करता है. डांस थेरेपी है, स्पोर्ट्स थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, रेंज ऑफ थेरेपीज है. बट अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा आइवन पैवलॉव, उनकी एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थ्योरी थी, उसी पर उनका ये जो अप्लाइड बिहेवियरल थ्योरीज, जो अप्लाइड बिहेवियरल थेरेपीज जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को कराई जाती हैं, वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. बट मैं अगेन यही कहना चाहूंगी, एवरी ऑटिस्टिक चाइल्ड इज यूनिक. हमें पहले उनके साथ बॉन्ड डेवलप करना चाहिए, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए और अपनी ट्रेनिंग को भी टेलर करना चाहिए. We'll come to more of this. We'll come to more of how we have to deal with these children. So, Dr. Sujata, since you are on with everything that you know about autistic, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने स्किप करना पड़ रहा है क्योंकि आप पहले ही आंसर दे रहे हैं उनका. मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और दर्शकों के भी ऐसे सवाल होते हैं. They want to know more about these children.
So, are there enough sufficient schools on autism disorder? Have you been to any of these schools? स्कूल्स तो डेफिनेटली देयर इज अ डर्थ ऑफ स्कूल्स, बिकॉज अगर आप एक नॉर्मल स्कूल की बात करें और आप एक नॉर्मल स्कूल में जाएं, तो इफ योर चाइल्ड इज ऑन माइल्ड स्पेक्ट्रम, तो दे विल आस्क यू कि आप एक शेडो टीचर रखिए, बट शेडो टीचर की भी जो सैलरी होगी, दे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आस्क कि आपको वो पे करनी पड़ेगी, विच इज अ हेफ्टी अमाउंट. बाकी फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हु आर ऑन माइल्ड to sorry, on moderate to severe spectrum, unke liye to normal schools, they are not at all open, so you have to look for special schools. Ab special Oh, schools bhi you can count on fingers, and jo special schools ki condition hai, main I'm not saying this for all the schools, but जो भी स्पेशल स्कूल की कंडीशंस हैं कुछ कुछ की, वो इतनी डेप्लोरेबल हैं कि आप अपना बच्चा वहां भेजना नहीं चाहेंगे. तो ऑफ कोर्स right. बहुत जो पेरेंट्स हैं उनके पास फिर कोई अपॉर्चुनिटी बचती नहीं है. दे हैव टू टेक देम टू प्राइवेट एक्टिविटी सेंटर्स which are offering ABA therapies, occupational therapies, and which are very, very expensive. Right. So, is there any government support on this? Do you think are we building a society which is more inclusive? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे बच्चों को एक इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं मिलती, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक अ चाइल्ड कैन क्योर all kind of problems, disorders, when there is a society which welcomes him. So, do you think the government is building an inclusive society for them? गवर्नमेंट सपोर्ट तो मिनिमल है. अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या सपोर्ट है, कि गवर्नमेंट गिव्स अ टैक्स रिबेट ऑफ 75,000 to 1 लाख रुपीस, कि अगर आपका बच्चा आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले आइए, डिसेबिलिटी अगर आपकी 70% से 100% के बीच में रेंज करती है, तो हम आपको ऐसे टैक्स रिबेट देंगे. और इंक्लूसिव सोसाइटी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज वे बिहाइंड, लॉट ऑफ एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी उस एरिया में तो सपोर्ट है ही नहीं. बस आप देखिए हैदराबाद, मुंबई, ऐसी जगहों पे पेरेंट्स ने खुद मिलकर ऑटिस्टिक सोसाइटीज बनाई हैं, जहां पर वो अपने साथ मिलकर रह रहे हैं, बिकॉज बेटर अंडरस्टैंडिंग है. आप Okay. अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, दूसरे का बच्चा भी है, तो आप समझ सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं. बट वो सब प्राइवेट है, पेरेंट्स ने खुद अपना कोलैबोरेट करके बिल्डअप किया है. बट अगेन, अगर आपको ऐसी ऑटिज्म सोसाइटी में सोचना है अपने बच्चे के बारे में, तो यू नीड टू हैव मनी फॉर दैट. तो Right. यस, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, बहुत मिनिमल है. और वी आर वे वे बैक, बहुत एफर्ट्स चाहिए. अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, इतनी लंबी क्यू है, और फिर वहां उनके पास एडिक्वेट स्टाफ नहीं है. आप ये सोचिए, मेरे हस्बैंड तो ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ पीडियाट्रिशियन, तो हम लोगों के पास तो फिर भी इतनी नॉलेज है. देन ऑल्सो वी वर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इतना हम लोगों ने फिक्स किया. तो जो बिल्कुल ही नया है इस फील्ड में, वो कैसे मैनेज करेगा? Correct, correct, correct. I agree. There is a lot more work by the government to be done on this, and people like you who create the awareness, tell them ki kya kya problems hoti hain. We're very, very happy to have you here to talk about it so openly, which is also a kind of an inclusion of these children in the society. So, parents भी कई बार नहीं इस बारे में बात करना चाहते, but I'm very happy to see you here talking so nicely, so openly about all the difficulties that you faced. What is the best way that you thought was the way to teach your child to be happy, to be inclusive, and to get over this issue, which is, of course, it's not something that you would want to have, but it's a birth disorder. You can't help it. So, what is the way you made the child be happy and be inclusive? How did you teach your child? ओके, मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले एक चीज करी, एक्सेप्टेंस, जो स्पेशल पेरेंट्स जहां पर मुझे लगता है लैक करते हैं. मैंने अपने आप को समझाया कि ऑटिज्म इज नॉट अ चॉइस, बस एक्सेप्टेंस इज. अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मेरा बच्चा स्पेशल है, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी. तो पहली चीज मैंने ये करी. दूसरी चीज मैंने जिस पे फोकस किया कि अगर मैं खुद
खुश नहीं रह पाऊंगी, मैं कभी अपने बच्चे को खुश नहीं रख सकती. So I have to Correct. keep myself happy, content, and then I can keep my child happy. And तीसरी चीज, I have seen parents, they take their child from one therapy to the another therapy कि जितना सिखाएंगे उतना सीखेगा. But at the end of Hmm. the day, उस जो चीजें हमें abnormal लगती हैं वो उस बच्चे के लिए normal है. तो हमें उसको भी अपना टाइम देना चाहिए. जैसे हमें अपना स्पेस चाहिए, उस बच्चे को भी अपना स्पेस चाहिए. तो Absolutely. और मैंने अपनी डॉटर को वो स्पेस मैं देती हूँ. डेफिनेटली आई टेक हर टू थेरेपीज, आई ट्रेन हर एट होम. और मुझे लगता है पेरेंट इज द बेस्ट टीचर. और आपको Correct. अपने बच्चे की Correct. पहले नीड समझनी चाहिए एज अ पेरेंट, एंड देन Hmm. आपको अपने बच्चे के साथ काम करना चाहिए. जैसे मैंने अपने बच्चे के साथ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग, तो मैंने उसका एक्सप्रेशन Correct. बढ़ाया, मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज जेस्चर से, बिकॉज शी इज नॉन वर्बल, तो वो कम्युनिकेशन में मैंने कैसे फोकस किया. आई स्टार्टेड डांसिंग विद हर एंड शी स्टार्टेड Thank गेटिंग you. एंगेज. वो अब इतना ज्यादा एंगेज होती है चीजों को लेकर, मतलब, एंड शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट डांसिंग ऑल्सो. How nice, how nice. I think dance is anyway a very nice therapy. It brings Yes. out the best in you. It makes you smile. It makes you use your energy. So anyway, dancing is beautiful. But I would request all the parents who are going through this same situation to please take the clue from Dr. Sujata and see how beautiful life can be if you take everything in a positive manner. Very nice, Dr. Sujata. But let's move on to something more interesting now. And let's know about how did you plan to go? I mean, you were having so much in life already, doing so many. And then this beauty pageant. How did you manage to, and what was your plan? Kaise bana ye sab kuch? Um, First of all, it is like every woman dream to walk on ramp. तो वो तो मेरा childhood dream था ही, to walk on ramp, and I'm always Okay. very creatively inclined. I'm always well dressed. I'm fond of eye makeup and I'm fond of dancing. तो मुझे एक platform चाहिए था वो explore करने का. And way back into around 2019, yeah, my husband एक दिन वो लेके आए कोई कि super mom हो रहा है, why don't you participate in this? तो मैंने How nice. ऐसे ही अप्लाई किया and I participated and I became the first runner up Super Mom 2019. And then वो होता है ना, एक बार आप जीतते हो तो अंदर से एक और इच्छा होता है, let's try once again, कोई international pageant try करते हैं. And you know, it was a beautiful experience because मैंने कभी, I am a kind of person who wear Punjabi juttis, and they had given us the strict instruction कि आपको 4 inches heel पहननी है. And Okay. I had a heel fall so many times, but now I can walk very confidently in heels. And then हमें अपने looks create करने थे, traditional look create करना था, talent round का Hmm. look create करना था, evening gown look create करना था, white gown फॉर्मल लुक क्रिएट करना था. तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा और बहुत ही, मतलब, मेरा जितना भी क्रिएटिव अर्ज थी ना वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हुई उसमें, क्योंकि मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली इतने सारे लोगों के साथ के सामने परफॉर्म करने की. इवन टैलेंट राउंड वाज वेरी अप्रिशिएटेड बिकॉज आई परफॉर्म्ड ऑन थीम ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. So it was a very nice experience and I got a lot of support from my family, especially my mother. She took care of my Sujata, daughter we during move on to the moving next sessions. question. Because of a paucity of time always, and because of so many questions, and because of some technical error also today where bar bar आवाज जा रही है. So I would request, let's pick up the next question quickly before we log out again, because it rains outside. I think आज काफी heavy rains भी हैं. So what was the reaction of your family and friends? They must have like ये तुम कहाँ चली, मतलब after a teacher and being something else and you're going into beauty pageant. So what was their reaction and who was the biggest supporter of yours? इनफैक्ट सभी सपोर्टिव है. मेरे पेरेंट्स तो शुरू से बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड एंड दे हैव रियली encouraged me to explore new things in my life. And my husband told me, मुझे पता है तुम जाओगी तो पक्का, तुम करोगी तो पक्का, because you love exploring new things in life. तो family was very very supportive. और
उन्हें लगा कि हाँ ये इसको लाइफ में शुरू से डिफरेंट डिफरेंट चीजें, आई एम अ परफेक्ट जेमिनाई जिसका इंटरेस्ट एरियाज बहुत वेरिड है। तो सबने बोला जाओ, और सपोर्ट किया बहुत ज्यादा। उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं ग्रूमिंग सेशंस जो इतने टफ थे, बिकॉज आई एम फ्रॉम डिफरेंट फील्ड एकेडमिक्स ऑल टुगेदर, और वहां पर मॉडल्स थी, एक्ट्रेसेस थी, तो नहीं कर पाती, बहुत मुश्किल रहता। जी, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस एट द पेजेंट? डिड यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फील दैट मे बी मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, या कुछ और सीखना चाहिए था, या आई एम लेसर और मोर देन अदर contestants around? Actually, all the photographers and cameramen, they were really very happy with me, because मुझे जो script मिलती थी ना, तो academics का part था, या being a teacher, being a professor, वो मेरा plus point था. Other girls used to take lot of बीच में shoots में they used to take retakes. मैं एक ही बार में सब कुछ कर देती थी, because of the confidence that I had, because I'm a teacher, I'm a professor. तो वो speaking skills और communication skills का जो confidence था, वो हमेशा help किया. But definitely walking on ramp with especially that evening gown, I wore that heavy evening gown for the first time in my life, and walking on ramp with 4 inches heel, with smile on your face, with full makeup on, was very difficult. And we had for this beauty pageant judges में हमारी Miss Suman Rao थी, who's Miss World second runner up 2019, and Mr. World Rohit Khandelwal. So 2016 he was Mr. World to 2016. तो really बहुत ही amazing awesome experience था, बहुत ही different experience था, walking on ramp with full makeup on, beautiful dresses, और सब सारे channels का focus आप पर था, इतनी सारी Right. pictures, photographs, portfolio shoots, बहुत मजा आया. It's a good experience. I'm sure it's a good experience. And you being a professor, a professional, an author, how do you manage the time for all this? Do you get support at work and home? Yes, definitely. मेरी daughter is my best teacher, because उन्होंने मुझे लाइफ में उसने मेरे को लाइफ में टाइम मैनेजमेंट सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया. तो आई लिव फॉर द मोमेंट. मुझे हर मेरा एक एक मिनट प्लान्ड होता है, और मैं कभी भी टाइम मतलब मैंने अपनी लाइफ से प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल एंड कर दिया. एंड शी इज द वन जिसने मुझे छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सिखाया. शी इज द वन जिसने मुझे जो ट्रिवियल चीजें जो हम जनरली जिंदगी में इग्नोर कर देते हैं, उसमें खुशियां ढूंढना सिखाया. तो इसलिए मेरी लाइफ में जब ये टाइम मैनेजमेंट आया, डिसिप्लिन आया, मैं हर मिनट को प्लान करके चली, तो मेरे हर चीज it started falling in place. Very nice. So Very nice. Congratulate you for getting this recognition, which is so beautiful. Why don't you show us your crown? Did you yes, get a crown there? yes. Oh, My that's crown. so pretty. We would love you to keep wearing that for some time. That is so very pretty. I have to make a bun, because otherwise it will not fit in the straight hair. Okay, it's very pretty, and I think it's one of the most prestigious and one of the most cherished things of yours now for your life. You will keep it very, very well preserved and beautiful it is. We congratulate you for that. Are you also supposed to wear a sash or something? Did they put you a sash also? Yes, I think that's the one this is you're wearing. Okay. We don't get to this see is the my. whole of it. If you could just read what's written on that. Okay, it This says is Mrs. India International. Beautiful. It must be such a proud feeling to be wearing this. yes. It is a very And it different comes with a feeling. lot of responsibilities also. Yes. Right. You are now an icon and you need to carry some responsibilities, not just towards your family and towards your work, but towards the society at large also now. Yes. And I'm True. sure with your kind of thought process, with your kind of gentle heart, you are already doing so much. And I read about the project that you're doing, Samvednayein. So what is Samvednayein? And
What is the way to launch this? What exactly do you do in this? Actually, it is way back, like almost 2 years back, when I started teaching dancing to my daughter. I was looking for a platform where she can perform, because घर में तो मैं उसे बहुत सिखाती थी, तो मुझे लगता था कि अब she used to perform with me in the house. I used to teach her. तो मुझे लगा क्यों ना स्टेज पे परफॉर्म किया जाए. So I started looking for a platform. वो मुझे कहीं मिला नहीं, अनफॉर्चुनेटली. और मिला भी तो मुझे ऑर्गेनाइजर से सपोर्ट नहीं मिला, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनमें सेंसरी ओवरलोड हो जाता है, with the lights, with the camera, with the crowd. तो you have to be sensible and sensitive to deal with such issues. तो मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला. तो मुझे लगा ऐसे बहुत, जैसे मेरी डॉटर है वो परफॉर्म करना चाहती है, ऐसे बहुत सारे बच्चे, बिकॉज मैंने दी ऑटिस्टिक चिल्ड्रन आर स्पेशली एबल, तो उन लोगों को कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होगा कि वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सके. तो क्यों ना मैं वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं. तो हमने फिर ये विद माय हस्बैंड, एंड ऑफ कोर्स देयर इज वन अदर पर्सन, ही इज अ म्यूजिशियन, मिस्टर सुभाष डे. माय हस्बैंड डॉक्टर पुनीत कालरा, मिस्टर सुभाष डे और मैंने तीनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव ये लॉन्च किया, संवेदनाएं, जिसमें हमने सोचा कि हम बच्चों को प्लेटफॉर्म, स्पेशल बच्चों को, स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे टू शोकेस देयर टैलेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. और हमने बहुत ही एक ग्रैंड शो प्लान किया था अप्रैल 2020 में, बट बिकॉज ऑफ कोविड वी हैव टू पोस्टपोन इट, एंड आई बाय गॉड्स ग्रेस 2021 में हम डेफिनेटली इसको करेंगे. तो बाय दैट टाइम हम बीच में ऑनलाइन शोज कर रहे थे, हमने काफी ऑनलाइन शोज किए भी सक्सेसफुली. तो संवेदनाएं बेसिकली स्पेशल बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म है कि आप आए, परफॉर्म करें, हमसे आप पूरी सपोर्ट चाहेंगे आप मिलेगी. और दूसरा चीज है कि हम लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, जैसे हम वी वर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, even having so much of knowledge, even having somebody who's from the medical profession. We were in we faced a lot of trials and tribulations in life. So we really want कि दूसरे लोगों के लिए अगर हम कुछ भी मदद कर पाएं, उनकी कुछ मुश्किलों को कम कर पाएं, तो हम उनके लिए always available हैं. I think it's a beautiful, beautiful thought to give a platform to these children. Like you said, you want to build an inclusive society. इससे बेहतर क्या हो सकता है? When they come and they also perform and they compete with the world. It is a beautiful thing from my side and from the entire team of 10 News. I wish you and all your co-partners a very, very successful Samvednayein for next year. Of course, COVID has delayed it, but delay does not mean it is not going to happen. I'm sure it is going to happen very, very soon. And these children are going to be the top performers of 2021. Wishing you a very, 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 very nice future with these children. So, Dr. Sujata, what is your future goal? Apart from taking some Vednai, maybe on the international level also. But apart from that, what exactly do you plan? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, तो मुझे अपना यूट्यूब चैनल एक्सपैंड करना है ऑन a big scale. So I'm really working hard for it. नए नए आइडियाज आते रहते हैं, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, स्पेशली विद माय प्रोफेशन विच इज वेरी वेरी डिमांडिंग. तो एक डेफिनेटली ये है, यूट्यूब चैनल मुझे एक्सपैंड करना है. और दूसरा मुझे I'm doing research in the field of behavioral finance. So I'm again writing one paper in collaboration with Professor Baker Kent. वो भी बहुत बात research है और behavioral finance area में है. तो I'm really waiting कि वो Indian context में first of its kind होगी. एक ये मेरा future goal है जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ. और ऑफ कोर्स अभी मैं सबटाइटल विनर हूँ, तो आने वाले टाइम में मुझे जरूर लगता है कि एक और इंटरनेशनल पैजेंट करना है जहाँ पर मैं क्राउन विनर हूँ. तो अब कॉन्फिडेंस आ गया है, बहुत सारी चीजें सीखी है. वो हाउ टू वॉक ऑन द रैम्प, मतलब मॉडल की लाइफ इजी नहीं है. यू हैव टू maintain that smile on your face with full makeup on and with 4 inches heel and all kinds of dresses. तो एक पैजेंट और करना है. Very nice, very nice. I think you already have set up at least 2021 का आपके पास तो बहुत काम है, आपके पास बहुत कुछ करने को है. What is your biggest strength? I
truly believe in God. भगवान ने मुझे हर चीज के लिए strength दी है. मैंने जो बोला है ना, मतलब मुझे वो रास्ता मिल जाता है. And somebody has said कि भगवान हर जगह नहीं होते, तो God has created mother. So my mother is my biggest strength. You know, at this age also she's 65 plus. मतलब उनमें इतना एंथू है कि she says कि I want to do a course on speech therapy, क्योंकि मुझे ना विशारदा को स्पीच सिखाने हैं, ताकि वो उसका I will teach her speech. मैं नानी हूँ और मैं उसको हेल्प आउट करूंगी. तो मतलब she is my backbone. She is like always so enthusiastic and encouraging कि नहीं सुजाता, you do it, you go for the pageant. Even my husband also, he never stops me for doing anything. तो वो भी बहुत हेल्प करते हैं मुझे नई नई चीजें एक्सप्लोर करने में. तो आई हैव अ गुड फैमिली सपोर्ट, इसीलिए मैं इतनी आगे आ पाई हूँ. Very nice. Very, very nice. I'm very thankful to all the people who've been supporting you, because it's women like you who rule the roast now. And so happy to see that in spite of having so many troubles and so much workload and everything, you're still maintaining yourself. And with so many responsibilities that you still are, you are a happy person. I remember the first time when you called me, you were like all full of enthusiasm. And it is so lovely to speak to people like you, who's so full of positive energy. You're the kind of people who exhibit positive energy here and there. And I'm sure a lot of women, young girls, will take a lot of inspiration from you to go ahead and not just think about कि क्या छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है लाइफ की छोटी प्रॉब्लम्स हर किसी की होती है, बड़ी भी होती है, but how to take them in your stride and live a happy, beautiful, contented life is what we learn from you. It is so beautiful. And with that, I would like to say that we have very little time left for our show to get over. But before we leave, I would like to know what is that message that you would like to give to the youth or women of today or to all our viewers. कहते हैं ना कि things were created to be used and people are created to be loved, but the problem is people are being used and things are being loved. तो मैं आज के यूथ से और यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज पहली चीज डोंट फॉलो द हर्ड मेंटालिटी, कि आप वही जिंदगी में करिए जो आपको अच्छा लगता है. डोंट डू इट बिकॉज यू फाइंड इट हेप. Don't do it because others do it. Don't lose your individuality in the process of following others. तो एक ये चीज, और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे आज लगता है कि आजकल के यूथ दे आर वेरी इमोशनली फ्रजाइल. They are easily boggled by the challenges of life, because I teach that MBA segment of age group of MBA students. तो मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है. Live for the moment, enjoy your life. और जिंदगी में हमेशा अब आपको दो रास्ते मिलेंगे, वन लेस ट्रैवल्ड एंड वन मोस्ट ट्रैवल्ड. मोस्ट ट्रैवल्ड जो आपको सक्सेस देगा वो टेम्पररी होगा. जो लेस ट्रैवल्ड है वो मुश्किल जरूर होगा, बट वहां से जो सक्सेस आएगी वो परमानेंट होगी और वो आपके साथ हमेशा रहेगी. तो यही मेरा मैसेज है कि आप मेहनत करते रहिए, मेहनत से मत डरिए. इंसान को ना मतलब फेलियर से नहीं डरना चाहिए. यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू गो एक्स्ट्रा माइल. अगर वो मेहनत करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, हम रुक जाते हैं कि छोड़ देते हैं. डोंट गिव अप, जस्ट कीप डूइंग 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 एंड यू विल गेट इट. Super. I think that's one of the most beautiful messages that our youth and women of today have got. This is so beautiful, Dr. Sujata, talking to you. You are full of actually, you are like a basket of full of positive energy, and it is so wonderful to talk to you today. And we're so super proud of you, in spite of doing all that you do, and even winning the pageant. And we'll wish you all the very best for next year's crown that you're going to be participating in very soon. And we'll get you again on the show. With that note, we take goodbye from you today. And thank you so much, everybody, for joining in. Thank you, Dr. Sujata. Thank you, 10 Thank News, you. for giving us this opportunity. Thank you so much. Thank you. My pleasure.